Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss our next topic, which is the mechanical properties of solids. So the previous topic we have discussed about the elasticity, elastic limit, as well as plasticity. So now we are going to discuss about stress, strain, and Young's modulus, and how Young's modulus of a material can be determined with the help of an experiment. So first of all, what is meant by stress? Stress is the force acting on a unit cross-sectional area of the material. The force acting on a unit cross-sectional area of the material. In other words, we can say that the force per unit area is also called stress. Force per unit area is also called stress. Suppose there is a wire and it experiences a tensile forces. आप note कर सकते हैं कि there are two forces and these forces are called tensile forces, and the cross-sectional area of this wire is A. So let F is the applied force, A is the cross-sectional area of the wire, then stress, which is represented by this symbol called sigma. So sigma is equal to F over A, force per unit area, and its unit is Newton per meter square or Pascal. For force there is Newton, and for area meter square. So Newton per meter square or Pascal is the unit of applied stress. The second term is strain. So strain is the measurement of deformation which is produced in the body in the result of applied stress. कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस से अप्लाई करेंगे तो उस अप्लाइड स्ट्रेस के रिजल्ट में उस सब्सटेंस के अंदर जो डिफॉर्मेशन पैदा होती हैं, जो चेंजेस टेक प्लेस होती हैं, उन चेंजेस की मेजरमेंट को स्ट्रेन का नाम दिया गया. So strain is actually the measurement of deformation which is produced in a substance in the result of applied stress, that is called strain, and it can be written as extension produced or increase in length in a body per unit length is also called strain. Extension produced in a body per unit length is called strain. Suppose there is a piece of wire whose original length is L. Original length is L. So when tensile forces are applied on this piece of wire, then extension is produced in the wire. So that extension or increase in length is represented by delta L. As you can see in this picture, this is the original length of the wire up to this end. And then under the action of these tensile forces, this increase in length occurs in the wire, delta L. So delta L is extension or increase in the wire. So strain, which is represented by epsilon, would be equal to increase in length to the original length, delta L over L, where delta L is increase in length and L is the original length, and it has no unit. Strain is a dimensionless quantity. इसकी कोई यूनिट नहीं है because it is ratio of two similar quantities. That's why strain has no unit. In case of extension or compression, you must know that if we apply tensile force, then we have tensile stress as well as tensile strain. अगर एक ऑब्जेक्ट पर आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक ऐसी फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रही हो, अगर वो आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, then a tensile stress will produce and tensile strain is also produced in that material. But if we apply compressive force, then we have compressive stress as well as compressive strain. So in the result of compressive forces, there would be compressive stress and compressive strain. The next term is Young's modulus. And Young's modulus, इसको आप ड्राइव करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हेल्प लेंगे एक ग्राफ की, और ये ग्राफ प्लॉट किया गया है स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन.
जबकि इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें ये ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन था. सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग a force extension graph, if you plot stress against strain for an object showing linear or elastic behavior, then you will get a straight line like this. So here along x-axis there is strain, along y-axis there is the stress, and graph is a straight line graph है. और from this graph we can derive the value for Young's modulus. Hence the gradient of the straight line graph provides the value of Young's modulus for a material. So gradient of the straight line graph, which is stress over strain. Here stress is actually the change in y-axis and strain is actually the change in x-axis. So this gradient is equal to Young's modulus, and Young's modulus sometimes represented by E and sometimes we represent it by Y. Y से भी इसको represent किया जा सकता है, E से भी इसको represent किया जा सकता है. And this ratio, because it is a straight line, so this ratio of stress and strain remains constant. So E is equal to constant. So within the elastic limit, the ratio of stress and strain remains constant. E is equal to stress over strain. And we know that stress, which is also called the tensile stress, F over A, force per unit area, and strain is increase in length to the original length, delta L over N. So finally we can write E is equal to FL over A into delta L. And the unit for Young's modulus is the same as the unit of stress, that is Newton per मीटर स्क्वायर, बिकॉज स्ट्रेन हैज नो यूनिट. तो जो यूनिट स्ट्रेस की यूज हो रही है वही कुछ आप यंग्स मॉडुलस के लिए भी यूज करेंगे, एंड दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ हाउ कैन वी डिटरमिन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल? तो इसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेनी है और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को ड्राइव करेंगे. फॉर दिस पर्पस लेट वी हैव टू आइडेंटिकल वायर्स and they are hung from a beam as shown in fig. So these are two wires. One of them is named comparison wire and the other one is called the test wire, and both are hung from this beam. So a scale is fixed to one wire and a mass hung on the end to remove the clinks in it, and this wire is used as a reference standard. So one of the wire, ये जो फर्स्ट वन है जिसको कंपैरिजन वायर लिखा हुआ है, इस कंपैरिजन वायर के साथ आपने एक स्केल को अटैच करना है, और स्केल को अटैच करने के बाद इसके साथ एक स्मॉल मैस भी हंग कर देते हैं. वेयर इज अदर वायर विच इज कॉल्ड द टेस्ट वायर, it has small load placed on it to straighten it and a vernier scale. इसके साथ आपने ये एक vernier scale attach कर देना है. So this is the main scale attached to the comparison wire, and the other is the vernier scale which is attached to the test wire. vernier scale को test wire के साथ और जो main scale है उसको comparison wire के साथ आप attach करेंगे. So this is an arrangement. So with the help of this arrangement, we can find the value of Young's modulus for this wire. अब इसमें हमें करना क्या है, इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? परफॉर्म करने के लिए आप इस टेस्ट वायर के साथ अटैच किए गए हैंगर में लोड प्लेस करना है. जैसे ही लोड प्लेस करेंगे, then extension will produce in this test wire. इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन इससे पहले आप इस टेस्ट वायर की ओरिजिनल लेंथ को भी फाइंड कर लेंगे, इसका डायमीटर भी फाइंड कर लेंगे. सो ओरिजिनल लेंथ एंड डायमीटर फॉर द टेस्ट वायर इज मेजर्ड. आप उसको मेजर कर लेते हैं. मेजर करने के बाद आप इस हैंगर में लोड ऐड करते हैं, और जैसे ही लोड ऐड करेंगे एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी जिसको आप स्केल की हेल्प से नोट कर सकते हैं. फिर आपने उस लोड को वहां से रिमूव करना होगा और ये नोट करना है क्या ये टेस्ट वायर अपनी एक्चुअल लेंथ गेन कर रही है. सेकेंड स्टेप में आपने फिर लोड और ऐड करना है, पहले से ज्यादा ऐड करना है. सो लोड ऐड करने के बाद आप सेकेंड टाइम एक्सटेंशन मेजर करेंगे, फिर लोड हटाकर देखेंगे. इस लोड को बार बार हटाने का मकसद ये है कि हम इस वायर के इलास्टिक लिमिट को नोट कर सके कि ये मटेरियल, ये वायर किस लोड तक,
किस मैक्सिमम स्ट्रेस तक अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन करने की सलाहियत रखती है, कि जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं ये अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस रीगेन कर सकती है। आप उस इलास्टिक लिमिट को यहाँ से नोट करेंगे। सो बाय मेजरिंग द सेवरल वैल्यूज फॉर स्ट्रेस एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा और ये ग्राफ होगा स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन, और उस ग्राफ में आप उसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे एंड दैट ग्रेडियंट विल प्रोवाइड यू द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। यंग्स मॉडुलस को फाइंड करने के लिए इस वायर की जो लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए और थिन वायर मस्ट बी यूज्ड, ताकि आप उस यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सके। नाउ द बिहेवियर ऑफ दिस वायर under the stress can be explained with the help of stress strain curve. So if we plot the graph between stress and strain for their different values, then it would be a curved line. Initially it is a straight line and then it changes to a curved line. So in this stress strain curve there are few points. So the first one, which is called the linear region, जो आपको यहाँ इस ग्राफ में इस स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड द लीनियर रीजन। और इस लीनियर रीजन में आप नोट करते हैं कि बोथ दीज क्वांटिटीज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहां तक ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप स्ट्रेस बढ़ाते हो, लोड बढ़ाते हैं तो एक्सटेंशन भी बढ़ती है, लोड कम करेंगे तो एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। सो स्ट्रेस and strain, they remain directly proportional to each other in this region, which is called the linear region. And this point is called the proportional limit, the maximum stress that a material can withstand without losing the straight line proportionality. इस point तक जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन रहता है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां तक ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। So this point is called the proportional limit. After this, the second point is called the elastic limit. So elastic limit can be described as the maximum stress that a material can withstand without any permanent change. कि यहाँ तक जो भी चेंज उस सब्सटेंस में रिकॉर्ड की जा रही है वो टेम्पररी चेंजेस हैं, आर्जी तौर पर है। आप इस पॉइंट तक जो भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उससे जो डिफॉर्मेशन टेक प्लेस हुई है वो एक टेम्पररी डिफॉर्मेशन है। आप स्ट्रेस को रिमूव कर दोगे तो वहां वो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस रीगेन कर लेता है। सो एट दिस पॉइंट द मटेरियल स्टॉप्स बिहेव इलास्टिकली एंड देन इट बिगिंस टू बिहेव प्लास्टिकली। इस पॉइंट के बाद इसका जो बिहेवियर होगा वो प्लास्टिसिटी में लाई करेगा, जबकि इससे पहले तक जो कुछ है वो इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट, this is called the yield point. So at this point the material shows a large increase in strain for a small increase in stress, and this region is called the plastic region. So the extension increases rapidly for small increase in stress in this region, कि अगर आप एक small stress भी apply करेंगे तो एक large increase in length आपको नोट करने को मिलेगी। So solids which behave in this way, they are called ductile. So ductile substances are those substances which undergo plastic deformation until they break. कि ये वो सब्सटेंसेस होंगे जो इन तमाम स्टेजेस से गुजरते हैं, जिनमें प्रोपोर्शनल लिमिट भी देखने को मिलेगी, इलास्टिक लिमिट भी आप नोट करेंगे, उनकी यील्ड पॉइंट को भी डिस्कस किया जा सकता है, एंड एट द लास्ट वो प्लास्टिसिटी भी अकर होगी उसके अंदर, एंड देन दे ब्रेक. So such substances are called ductile substances. On the other hand, there are substances which are called brittle substances and they break just after the elastic limit is crossed. कि जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी तो वो सब्सटेंसेस ब्रेक हो जाते हैं, and they are called brittle substances. For example, glass. Glass is a brittle substance and it will break just after the elastic limit is crossed. Now there are few more properties by using the stress strain curve. And number one is after the limit of proportionality, the wire no longer obeys Hooke's law.
यानी हुक्स लॉ विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप नोट कर सकते हैं, बट स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। लेकिन जब आप लोड को रिमूव करेंगे, अभी भी उस सब्सटेंस के अंदर ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन हुक्स लॉ वो सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट में लाई करेगा। नंबर 2, after the elastic limit, the wire shows a permanent change and never regains its original size and shape। यानी इलास्टिक लिमिट तक जो भी चेंजेस हैं वो आर्जी तौर पर है, टेम्पररी है, और जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर जो भी चेंज आएगी वो एक परमानेंट चेंज होगी, और उससे वो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल साइज या ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर सकता। And at the yield point there is a significant change in the internal structure brought about by the slipping of crystal planes। यानी इलास्टिक लिमिट के बाद जो चेंजेस आएंगी जिसमें यील्ड पॉइंट भी अकर होगा, वहां सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लेंथ आप नोट कर पाएंगे फॉर अ स्मॉल स्ट्रेस। एंड नंबर 4, in the plastic region, small increase in load produce a significant increase in extension because of flow process। फिफ्थ पॉइंट, इवेंचुअली कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस में रखते हैं और आप इस पे मुसलसल फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, देन अ कंस्ट्रिक्शन और अ नेक विल फॉर्म एट द वीक पॉइंट। उस मटेरियल का जो वीक पॉइंट है वहां पर एक नेक या एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हो जाएगी, एंड द टेंसाइल फोर्सेस देन पुल द रॉड अपार्ट। फिर वो उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है। सो फाइनली द ब्रेकिंग स्ट्रेस, which is actually the maximum stress, it is also called the UTS ultimate tensile stress, it will occur। यहां तक वो मटेरियल अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रख पाएगा, and after this point the fracture stress will produce and material will break। So these are the characteristics of a material or the behavior of the wire under the action of the applied stress। Thank you।